Hello, you can hear me? Am I audible? Yes, sir. Perfect. So, I guess फिलहाल अभी क्लास में आप ही हैं. So let's wait for a couple of minutes, 5 minutes maximum. Until then, आप मुझे थोड़ा सा feedback देंगे. आपने last class ली थी? Hello. No, sir. अच्छा, last class आपने नहीं ली थी और ठीक है. ये आपकी पहली क्लास होगी, लाइव क्लास. Yes, sir. Right. So did you get the time to watch the previous lecture जो मैंने आपके साथ शेयर किया था? मैंने आपके साथ सिर्फ एक आई थिंक शेयर किया है क्योंकि वो मुझे था कि आपने शायद लास्ट क्लास जो है ना वो ली होगी. So I'll share the other one with you as well. But did you Right, get sir. time to go through uh, the lecture? Right, sir. आपने देखा है वो लेक्चर जो मैंने आपके साथ शेयर किया? जी, सर. अच्छा ठीक है. तो कोई आपका क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दैट लेक्चर या कोई फीडबैक, कोई suggestion, anything? एक्चुअली सर मैंने अभी हाफ देखा सर, फुल नहीं देखा. राइट, ठीक है ठीक है. तो मतलब अभी भी आप आज क्लास में हैं, so आफ्टर द क्लास एंड्स आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं. हाउ डिड यू लाइक द क्लास? इफ देयर इज एनी चेंज जो आप चाह रहे हैं कि क्लास पढ़ाने में कोई थोड़ा चेंज वगैरह हो, स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो, एनीथिंग, राइट? इवन अगर मेरी स्पीड ज़्यादा स्लो है या तेज़ है तो यू कैन tell me about it, so I'll gauge the speed accordingly. राइट सर. ठीक है. I guess तब तक I'll share my screen as well. So we can start. अच्छा, so I think हमने mostly आज वैसे problem solving करनी है. तो I think it would be this, इस तरह हो सकता है कि आप जो है ना वो lecture जो है उसको go through कर लिएगा, जो मैं आपके साथ दूसरा भी share कर दूंगा. But we'll solve the problem in a way के like I'll make sure कि आप follow along कर रहे हैं with everything. ये वैसे असल में chapter भी काफी basics है, basics है chapter, units, measurements and everything. So इसमें I would think कि इतना ज़्यादा issue नहीं होगा. लेकिन even अगर आपको कोई problem होती है even during the problem solving, क्योंकि I guess आपने जो last lecture है वो नहीं लिया. So लेकिन I'll try my best कि जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना उसमें आई कैन कवर एवरीथिंग एज वेल. मतलब जो थ्योरी वाला पार्ट जिस तरह हमने पढ़ा था उसको लेके चल के तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. तो होपफुली प्रॉब्लम नहीं होगा. अच्छा, ऑल्सो आई अपोलोजाइज फॉर के टाइम थोड़ा सा लेट हो गया. असल में टाइम जो है हमने चेंज भी अभी करना है कि लेट्स सी, आई वाज थिंकिंग कि इसको थोड़ा अर्ली कर दें ताकि सारे जो बाकी सेशंस भी हैं वो भी थोड़ा मतलब अर्ली हो जाएं, क्योंकि इस तरह फिर काफ़ी मेरे जो सेशंस हैं वो भी काफ़ी ना रात तक चले जाते हैं. तो इफ अगर कोई पॉसिबल सजेस्टेड टाइम है इवन आपके माइंड में, सो यू कैन ऑलवेज सजेस्ट इट एंड वी कैन सी.
Right, और sir. if you're comfortable with this time तो वो भी ठीक है, फिर I can check with other classes जो मैं उनको अगर थोड़ा सा back track कर लूँ थोड़ा सा time. But okay, so anyway, I think it's 5:05, so let's start with the lecture. So I guess अभी तो क्लास में आप हैं and हमने next topic अभी हमने topic dimensional analysis which is a very basic thing उसको explain करना है. तो हम इसके बाद साथ ही problems पे जाएंगे, so वहाँ पे it will be more clear जो हमने पहले भी किया है. मतलब ये काफी basic चीजें हैं, data round off करना, precision accuracy क्या होती है, significant figures क्या होते हैं, and addition subtraction वगैरह आप किस तरह करते हो using knowledge of significant figures, errors क्या होते हैं, and ये base quantities, derived quantities, मतलब mainly बस यही हमने सारा discuss किया है ना. So इसमें आपको कोई do you think is there any जो मैंने अभी topics के नाम लिए हैं, any topic that you would like me to go through at this point अभी? Keeping in mind के like मैं आपके साथ जो recorded lectures हैं वो भी share कर दूंगा, तो you can always go back and look at those as well. But anything जो you want me to go through it के नहीं आप इसको एक दफा दोबारा repeat करवा दें in topics में. सर प्लीज रिपीट करें सर जो आपने बोला अभी सर, जो नाम बोले आपने. ओ ठीक है, हमने प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी को थोड़ा सा डिस्कस किया था, राउंडिंग ऑफ डेटा के हम वो नंबर्स को राउंड ऑफ किस तरीके से करते हैं, उसका क्या मेथड होता है. फिर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस किया था कि कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं और कौन से नहीं हो सकते, उनके साथ हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह कैसे करते हैं, अलजेब्रा बेसिकली उनका कैसे होता है, फिर एरर क्या होता है, एंड साइंटिफिक नोटेशंस को हमने डिस्कस किया था, प्रीफिक्सेस कैसे यूज करते हैं, किलोग्राम्स, गीगा, पीको, ये सारे प्रीफिक्सेस कैसे यूज होते हैं, एंड देन बेसिक क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं. सर आप प्लीज ये वाला टॉपिक है ना एरर्स वाला सर, ये सर रिपीट कर दें. एरर्स वाला? यस सर. अच्छा ठीक है, सो दिस टॉपिक राइट, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं. ठीक हो गया, सो मैं एक सेकंड पॉइंटर ऑन कर लूँ, ये आपके पास शो हो रहा होगा, ठीक है. स्क्रीन आपके पास क्लियर है ना बिल्कुल, इस पॉइंट पे सब नजर आ रहा है? यस सर. ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट. अच्छा, तो एरर जो है ना बेसिकली ये होता है कि सपोज कि आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो एंड यू वांट टू मेजर, सपोज आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी को मेजर करने के लिए. अब आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, वट एवर द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर, अभी वी डोंट रियली केयर अबाउट दोज, लेकिन आपने एक जी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली मेजर की है, आपके पास एक वैल्यू आ गई है एक्सपेरिमेंट करने के बाद. अब ये एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी की लिटरेचर में भी वैल्यू अवेलेबल है, जिन्होंने मतलब वेरी हाई प्रिसिजन और एक्यूरेसी के साथ जो हायर लेवल लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं. तो वो वैल्यू जो वेल नोन वैल्यू है लिटरेचर के लिए, जिसको कहते हैं विथ वेरी लेस सिग्मा एरर एक होता है, बट दैट्स नॉट द कंसर्न, वो वैल्यू आपके पास है जिसको आप स्टैंडर्ड वैल्यू कहते हो. ठीक है, अब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपके पास एक वैल्यू आई है. अब आपकी जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वैल्यू से कितना डेविएट करेगी, कितना लेफ्ट, कितना ज्यादा होगी या कितना कम होगी, वो आपके पास बेसिकली एरर डिफाइंड होता है. अब आपके पास ये चीज स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का आंसर अगर आपके पास पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, तो इसका मतलब है कि आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आपने मेजर की है वो कम थी कंपेयर टू जो आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू थी. और सिमिलरली अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा आई है जो स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करो, अगर आप स्टैंडर्ड वैल्यू से ज्यादा आई है. अच्छा, इसका आंसर 0 नहीं आता होता इन जनरल. आपके नेचर में आपने कोई भी वैल्यूज आप मेजर कर रहे हो,
आप कभी भी एरर को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स जस्ट अ लॉ ऑफ नेचर कि वो आप मतलब आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ समथिंग, ठीक है। सो ये आपके पास बेसिकली एरर होता है। नाउ यू हैव टू टाइप्स ऑफ एरर्स आल्सो। आप एरर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हो। एक है असाइनेबल, ये वो एरर्स होते हैं जो जिनको आप सिस्टमैटिक एरर भी कहते हो। फिर आपके पास होता है अनअसाइनेबल, और ये रैंडम एरर्स होते हैं। सो असाइनेबल एरर्स वो उस तरह के एरर्स होते हैं जिनको आप एक कॉज दे सकते हो कि एक भाई इसने एक पैटर्न फॉलो कर रही है कोई चीज, तो वो एरर जो है उस पैटर्न पे बेस्ड है। तो आप कह सकते हो कि अच्छा कोई चीज अगर पैटर्न फॉलो करती है तो वहां पे एक आप उस पैटर्न को एक कॉज असाइन कर सकते हो कि इस वजह से ये पैटर्न जो है वो फॉलो हुआ है। सो आप उसको हमेशा असाइनेबल एरर्स को कॉज असाइन कर सकते हो। आप असाइनेबल एरर्स को कम कर सकते हो, यू कैन उनको स्लाइटली आप रिड्यूस कर सकते हो, सिंपली अगर आप अपनी वैल्यूज या अपने एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल कर लो। आप अपनी जो वैल्यूज मेजर कर रहे हो उनको आप कंट्रोल करके मेजर कर लो। जिस तरह फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आपके पास जो असाइनेबल एरर है ना, सिस्टमैटिक एरर, लीस्ट काउंट एक असाइनेबल एरर है। लीस्ट काउंट आपके किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में देयर इज अ लीस्ट काउंट फॉर दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट क्या होता है कि उसकी जो मिनिमम जो विद एक्यूरेसी के साथ जो वैल्यू मेजर कर सकता है वो लीस्ट काउंट होता है, राइट। सो आप उस लीस्ट काउंट को किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप कंट्रोल इस तरीके से अपने इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल कर लो कि आप उसमें लीस्ट काउंट जो है वो मिनिमम कर सको। सो आप इसको कंट्रोल इस तरह कर सकते हो। रैंडम एरर्स या अनअसाइनेबल एरर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नेचर में रैंडमली अकर करते हैं, एंड आप उनकी जो कॉज है ना उसको डिटरमिन नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटायरली रैंडम होते हैं। तो ये कोई पैटर्न नहीं फॉलो करते, देयर कोई ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा होगा यहाँ पे, कंप्लीटली रैंडम होंगे। और इनको आपने अगर कम करना है तो आप उसके लिए सिंपली एवरेज कंप्यूट कर लेते हो। आपकी जो आपने वैल्यूज मेजर की हैं, यू विल जस्ट कंप्यूट द एवरेज ऑफ दोज वैल्यूज, और फिर आप वो एवरेज वैल्यू यूज कर लेते हो, एंड दैट एवरेज वैल्यू विल बी द वैल्यू जो मतलब आप कह सकते हो कि इसमें मिनिमम एरर होगा। तो जितना आप मैक्सिमम रैंडम एरर रिड्यूस कर सकते हो वो आप एवरेज वैल्यू लेके कर लेते हो, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब आप अनसर्टेनिटीज को ना या एरर्स को बेसिकली उनके साथ आप वेल आई से कि आप उनके साथ खेल सकते हो बेसिकली इन दैट सेंस कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है, आप उसमें उसके अंदर आपको अनसर्टेनिटीज दी हुई है, तो आप टोटल अनसर्टेनिटी जो आपके फाइनल रिजल्ट में है, टोटल एरर आपके फाइनल रिजल्ट में वो क्या होगा। फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपके पास पावर का एक्सप्रेशन है V टाइम्स I, वोल्टेज टाइम्स करंट, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एक्सप्रेशन फॉर पावर। अब आपको वोल्टेज में एरर भी दिया है, प्लस माइनस कुछ एरर भी है, इसी तरह करंट की वैल्यू भी है, और उसमें कोई एरर भी दिया हुआ है। तो आपने बताने कि पावर में क्या एरर होगा, पावर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, apparent value with the error in that value as well. So वो हम किस तरह से करते हैं वो मैंने यहाँ पे थ्योरी में as such explain नहीं किया था, but we'll do the problems and it's very easy. Basically उसके लिए आप उसका एक तरीका होता है, मेथड होता है, हम थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेंगे, और फिर उस मेथड से एक रूल आपके पास आ जाता है जो हम यूज करेंगे कि आप जो है अगर इसमें V के ऊपर कोई पावर होती है तो उससे नीचे उतार के तो बस एरर्स को ऐड कर लेते हैं, एंड सो ऑन, राइट। उसमें हम अभी डिस्कशन करेंगे, बट सो फार एरर्स में हमने यहाँ तक बात की थी। सो इज इट क्लियर? यस। ठीक है, परफेक्ट। सो इसके अलावा और कोई चीज, आई गेस अब हम मूव करते हैं उसके ऊपर आगे जो हमने कंटिन्यू करना है, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है और तो वो भी आप पूछ लें। नो सर, अभी फिलहाल सर नहीं है। ठीक है। So I guess we'll start with the next topic जो हमने डिस्कस करना था, which is of the dimensional analysis. Basically dimensions हमें किस तरह से हमारे लिए काम आती हैं। So dimensional analysis असल में basically आपके पास क्या होता है कि
जो आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स हो गई फॉर एग्जांपल, आपके पास एक्सेलरेशन हो गई, मास हो गई, एनीथिंग, राइट, आप इनको बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हो। तो मास के लिए तो बेस क्वांटिटी ही किलोग्राम्स है। फोर्स को आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स आपके पास m टाइम्स a होता है, तो m और a की जो यूनिट्स हैं उनका प्रोडक्ट आपके पास फोर्स की क्वांटिटी आ जाएगा, राइट। सो हम किसी स्पेसिफिक सिंबल से इनको, इनकी जो डायमेंशंस है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपके पास, लेट्स सपोज के यू हैव फोर्स, ठीक है, फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इसके अगर मैं यूनिट्स लिखना चाहूँ तो वो होंगे किलोग्राम्स, और एक्सेलरेशन के होते हैं मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। ऐसे ही है, इस बात से एग्री करते हैं? ठीक है, यस। ओके परफेक्ट। सो आप इसकी डायमेंशंस ऐसे बता सकते हैं कि ये डायमेंशंस हैं मास m की, ये मीटर्स किसकी डायमेंशन है, लेंथ की, मास टाइम्स लेंथ, और ये डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर्ड व्हिच जस्ट मींस s की पावर -2। सो यू कैन राइट इट, और s किसके, टाइम के, सो t -2। तो ये बेसिकली आपके पास फोर्स की डायमेंशंस हैं। तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स की डायमेंशंस है mlt-2। So ये m is for mass, l is for length, और t is for time. You can represent most of your quantities in terms of m, l and t. ठीक है, so इनके कॉम्बिनेशन से आप काफी सारी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपके पास डायमेंशनल एनालिसिस आपको अच्छे से यूज करना आता है, आप उसके साथ फेमिलियर हो, तो आप एक पॉइंट पे आके आप फॉर्मूलेज भी इसको यूज करके काफी हद तक डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई फॉर्मूला भूल गया फॉर एग्जांपल, सो यू कैन चेक इट्स डायमेंशंस, लेफ्ट साइड राइट साइड पे डायमेंशन सेम है, सो यू कैन वेरीफाई कि आपका फॉर्मूला क्या था, which takes us to this next point कि हम होमोजेनिटी अपने एक्सप्रेशन की चेक कर सकते हैं। होमोजेनिटी का ये मतलब होता है कि मुझे पता है कि मेरे पास फोर्स की जो ये है, अगेन मैं ये आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फोर्स की जो यूनिट्स हैं वो हैं किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड, और फोर्स का जो फॉर्मूला है वो होता है F इक्वल्स ma। तो ma के भी ये यूनिट्स अगर आएंगे तो मेरी इक्वेशन homogeneous है उसके यूनिट्स। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ द यूनिट्स। तो अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड के यूनिट्स जो हैं वो सेम है तो आपकी इक्वेशन homogeneous है एक यूनिट्स वाइज। सो इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस पार्ट? नो सर, इट्स राइट। Okay, perfect. सही हो गया. So I guess with this now we'll move on to some of the problems. I guess यहाँ पे होंगे. Here we go. अच्छा. Let's me open this properly. अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं आपको पेज नजर आ रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से? यस। ठीक है, और क्लियर है, विजिबिलिटी ठीक है? यस सर, बिल्कुल साफ है। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, सही। सो वी हैव, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि एसआई यूनिट्स ऑफ गैस कांस्टेंट आर, तो हमें बेसिकली बताने व्हाट आर द एसआई यूनिट्स ऑफ द गैस कांस्टेंट। सो इट्स, आप एक एक्सप्रेशन से शायद फेमिलियर हो, PV इज इक्वल टू nRT। ये एक्सप्रेशन देखा हुआ पहले कभी? आइडियल गैस से थोड़ा सा, अगर आपको आइडियल गैस के बारे में आइडिया है तो शायद आपको उससे रिलेटेड है ना, वो बेसिकली आइडियल गैस लॉ से। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज द गैस कांस्टेंट और T इज द टेम्परेचर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन, हेलो जी यू कैन, जी सर, जी सर। सर। ठीक है, so we have an right hello जी जी, एक और एक्सप्रेशन भी होता है ना, PV इज इक्वल टू NKT।
Yeah, that where we have exactly that वो हमारे पास एक और expression भी होता है. It's in terms of Boltzmann constant, right? You're exactly right. But if we are writing it in terms of the gas constant R, क्योंकि R is the gas constant, right? सही है. So Which was we 8.31. yeah, exactly. But look at the question. It's basically asking you to find the SI units for the gas constant. So we use the technique of dimensional analysis, and we'll work out these units. You just joined in right now. You're Sayed, right? Yes. Sayed's iPhone, it says for me. Okay, what's your name? Sayyid Ahmed. Like second नाम Right, change okay. कर लेते. Okay, perfect. Okay. So we just started solving these practice questions, and we'll solve them in a way so that I can, even if you did not take the previous class, I'll try my best so that you can understand what we are doing. Okay. So okay, so this is the expression for PV is equal to nRT. So we have gas constant in here. All we have to do is rearrange this expression in terms of so that we can have R on this side. So this will become PV divided by N times T. Now we have to work out the units. So we know that the units for P are, so it's pressure, right? Pressure is force per unit area, right? Pressure is force per unit area. So the units for this are Newton per meter squared. Now we know what are the units for volume. We know the units for volume are simply meter cube. ठीक है? इसी तरह n के क्या units होते हैं? N is the number of moles. So we just use MOL to represent the units for n. And T is measured in Kelvin, in SI units. ठीक है? तो उसने वहां पे आप को क्वेश्चन में बताया कि आपने SI units निकालने. So T is in kelvins in SI units. Now all you have to do is just in सब values को इसी expression में plug करें. So you have the units for R. P के क्या है? Newton per meter squared. V के क्या है? Meter cube. So meter cube से multiply कर दें and divide this whole thing by N is mole and T is Kelvin. So moles times Kelvin. Now just do some cancellations. ये meter square पूरा खत्म हो जाएगा. यहाँ से एक meter रह जाएगा. So this becomes Newton meter over mole Kelvin. Now what is Newton meters? Newton meters को हम एक special नाम देते हैं. Do you know that? It's called joules, right? Because we know that work done is force times distance also, and this is Newton and this is meters, and हम in units को नाम देते हैं joules. ठीक है? So Newton meters की जगह we can write joules, and here we can write mole times Kelvin. So this is basically J MOL की power -1 because one of it is in the denominator, and then we have 1K in the denominator. So नीचे है क्योंकि denominator में तो minus sign और सिर्फ एक ही K है, so just 1. So these are the units. So what option is this? Do we have this option? Joules Kelvin per mole. So this is the correct option, right? Now, is there any question in what we just did? नहीं, but I have another question. Yeah, you can ask your उसको question. भी You can go ahead. okay. कितने topics हैं हमारे पास NET में? Acha, so there are approximately round about okay, I'll have to count that, so just give me 1 second. So we have around about 20 topics or so. Or how many are done?
We are just starting with this first one. It's been very slow. We just started last week, or we were the most of the time was introducing, and उस तरह थोड़ा सा गया था. अभी हमने अब हम इसके practice questions आज. My goal is to finish these practice questions, and then so we can move on to the next chapter. Okay, okay. And where can I Yeah. find the recordings? I would recommend that you attend all the lectures. I'll share the notes and all with you. But if you have missed the lecture, then if it's some urgent issue, then I'll also share the recordings with you as well. I think I'm not sure how Mega Lecture deals with all of this, so I'll let you know once I am aware of it. But I'm also aware of the fact that there are these video courses on our Mega Lecture website, and you can access all the videos and lectures there as well. Okay, you can ask. I'm pretty sure the teachers share their lectures. Right. Okay. So I'll just confirm this, and I'll let you know. Okay. Right. Perfect. So you can get to me on WhatsApp. You can privately message me as well, and I'll respond to you with any update regarding this thing. Right. And I'll share the lectures with you as well. Sounds good? Okay. Perfect. So here we just solved this question. Is there anyone who has any problem in this one, question 1? No, sir, it's right. No. Okay, perfect. So let's move on to this one, question number 2. It says the velocity of the particle is given by, we have v equals at squared plus bt plus c. If v is measured in meters per second, so immediately we know that's velocity, and t is measured in seconds, so immediately we also know that t is time. They're asking you the units of c. Now, well, you could rearrange this equation for c and try to work out the units, but unfortunately we don't know what are the units for a and b, right? So we don't know what are the units for a and b as well. So that technique is not going to work, right? So what do we do in this case then? Well, we use this thing where you say that you cannot add apples to oranges, right? So when you're adding, quantities are being added, they have to be of the same units, or you can say they have to be the same quantities, can only be added to each other. So here we have, on the left hand side, we have v, and we have at squared, that means that's also v, plus bt, that has to be v, and c, that also has to be of the forms of velocity. Hence c is just a velocity, and so it should be measured in meters per seconds, right? So the units for c should be meters per second, or ms minus 1. So the correct option is B, which says c is meters per second. Remember, they have given you options. A is meters per second, B is meters per second, and B, and but they have asked you the units of c, so you have to be very careful. So is that okay? Is there any problem? I think that this was pretty straightforward, right? So then let's move to question number 3. The question says that the least count of a stopwatch is 0.1 seconds. So this is the least count. The time of 20 oscillations of the pendulum is found to be 20 seconds. So each oscillation took 1 second. The percentage error in the time period is what? Okay, so, well, we know least count is 0.1 seconds. We know that total number of oscillations are 20, and we have, for all of these 20 oscillations, the total time taken is 20 seconds as well. We are asked to compute the percentage error in time. So percentage error is written as, let me write, percentage error is defined as the least count
ratio to the total number times 100. So I can write, all I have to do in this thing is just put in the values in this expression, and let's check. So we have 0.1 seconds divided by 20 oscillations and times 100. So if you do the math, you get 0.5%. So the percentage error is 0.5%, which is this option, option C. So is this clear? Okay, so if you have any questions, you can ask me, right? You can stop me in between and you can ask me. It's very beginning, so I think that you might be afraid to ask questions or so. So that's why I stop after everything and I ask you if it's clear or not. So, well, let's move on to question 4. And question 4, we have an equation which is P plus A over V squared. V minus B is equal to RT. And we're asked the SI units of A. So this is an equation. This is also the pressure, volume, and temperature equation, right? But this is when your gas is not ideal, right? So we have to work out the units of A. You can, again, you might be thinking you can do the same thing. You can factor out A, but we have this problem with B. But if you know this thing that you cannot add apples to oranges, then if this is P, then this A should be what? This whole thing is P as well, right? It is a pressure quantity. Is that clear? So pressure, right? So if P is pressure, then this whole thing A over V squared, where V is volume, this also have to be equal to some pressure. From this, you can factor out A and you get P times V squared, right? Now let's work out the units for A. We know the units of pressure P are simply newtons per meter squared. This was, we know this, we also did the same thing in question number 1. And we have squared of volume. So that means that is meters cube squared, which just means we have newtons per meter squared and meter to the power 6, which is, if you solve this, you get newtons meter 4. So these are the units for A. And so that your correct option is option B. Now let's move on to question number 5. Is there any question? Are you getting everything that, are you getting along with this? Okay, perfect. So can you let me know how much time is remaining? In this meeting, I cannot see over here. 30 minutes. Okay, perfect. So, okay, so question number 5, we have that we have the radius of a ball is 5.2 plus minus 0.2 centimeters. The percentage error in the volume of the ball is what? Okay, so we can assume that a ball, a ball is something like this. It's a 3-dimensional circle, which is just a sphere. So we have to have an expression for the volume of a sphere, which is 4 by 3 pi r cubed, right? Okay, so that's the volume of a sphere. Now, okay, 1 second. Yeah. So we're given that r is equal to 5.2 plus minus 0.2 centimeters. So this is the value and this is the error in that value. So our assumption is that the ball is spherical and we are required to find the percentage error in the volume. So first, let's compute the percentage error in radius. So we'll use the expression. We have
that radius, we have dr by r, where this dr is just the error in r, right? So the absolute value of this thing. So you can, I'll just write it in wording. So the absolute value of error divided by the actual value, which is of the radius. So the actual value of the radius times 100. So that's very simple. The absolute value of the error is 0.2, radius is 5.2, and in 200. So this gives you 3.8%, right? So the percentage error in R is 3.8%. So that's what we had to compute first. Now we can easily find the percentage error in volume using this expression for volume of a sphere. So if I have this thing, so I can just say, I can just get rid of this O and L and say just V is equal to this thing. So, well, now there's a method to do this, and then there is a rule that you can learn and follow that rule every time. So I'll just tell you the method in this part of the example, and then we'll follow the rule that we get from that method in the other problems. So, well, if I take the derivative of this, are you familiar with derivatives, by the way? Can you let me know? Can someone unmute themselves and let me know? Okay, yes. So is everyone familiar with derivatives? So, okay, so we have this thing. We have this expression for the volume. We'll take its derivative with respect to r. So we get dv over dr, which is equal to 4/3 times 3 pi r squared, right? So we have just taken the derivative. We brought this power down and we subtracted 1 from the power. And so I can rearrange this. So I can take this dr over here. So this is dr and it goes away from here. So now this is your expression for change in volume. Now, what you do is you divide this expression with the volume itself, right? So this thing gives you this form, error over actual value, right? So dv is the error in the value. It's the change in the value, infinitesimal change. So then that means I have to divide this whole thing by volume as well, which was 4/3 pi r cube. So what are you left with? So these constants will go away, right? Well, 1 second. This 3 goes away with this 3. So we have 4 goes with 4. We are left with this 3. And pi goes with pi. So you're left with this thing, a 3 over r dr, right? Now to find the percentage error in the volume, all I have to do is multiply this fractional error with 100, right? So we'll multiply the equation both sides with 100. So we get this thing is just percentage error